It's 6:30 in the morning as these rose farmers hustle to pluck as many flowers as possible. In the next 2 hours, they need to gather the entire harvest while it is still in full bloom. The traditional damask rose has been cultivated in and around the town of Kannauj in Uttar Pradesh for nearly 2,000 years. Muhammad Islam is a third-generation rose farmer from the region, but he's perhaps the first one from his family to have been struggling with an unusually low yield. For the past 3 years, weather fluctuations from unseasonal rain to heat waves have been impacting these flower harvesting cycles. कल पानी और आंधी आई है, उस वजह से मतलब पेड़ की जड़ें जो है हल जाती हैं और पानी से कीड़ा दौड़ जाता है फसल में, तो बेला और मेहंदी जो है, जो बेला और गुलाब जो है डाउन हो जाता है 8-10 दिन के लिए, और फसल में कीड़ा दौड़ जाता है। इसके लिए फिर दवाई खींचनी पड़ती है। अब इस समय छोटा छोटा हो जाता है फूल जो है छोटा छोटा हो जाता है। जब मतलब मौसम बिगड़ता है तो वो उसका वज़न कम हो जाता है। जैसे 10 किलो निकल रहा है तो 7-8 किलो पे रह जाता है कि, और फिर वो 8-5 किलो रह जाए, बताओ। The flowers here are grown as part of the town's 2,000-year-old lineage, going all the way back to the Mughal era, its perfume or ittar industry. For centuries, Kannauj has been considered the perfume capital of India. The flowers you see serving as the organic raw material for the industry. The Arabic word ittar literally translates as fragrant oil derived from flowers, and the entire process of making is done by hand, from plucking to distillation, where petals are steamed in large copper pots and their vapors condensed to finally extracting the oils. Every stage is manually handled. In a town of nearly 1.5 lakh residents, almost 80% is involved in the ittar making business. The Tandons run their own perfumery. The family is one amongst another 500 perfume units in Kannauj today. Some large-scale distilleries, others, like them, are homegrown businesses. Just increase a little bit of rose, one drop. Praveen Tandon inherited the skill of making ittar from his extended family. Post-COVID, they decided to start their own brand, Boond Fragrances. मेनली यहाँ के जो फ्लावर्स ग्रोन है ना, उस पे ही फर्स्ट वी ट्राइड, उसी पे हम लोग ने, जैसे रोज़ यहाँ का जो रोज़ है, जैस्मिन, माटी तो यहाँ का स्पेशल है। जो यहाँ की मेन एक नो-हाउ थी और जिसकी वजह से जो यहाँ पे, यहाँ के अलावा कहीं नहीं होता। Of late, however, they have been struggling with the quality of raw flowers, they tell us. जैसे इसी साल है कि फरवरी मार्च में जब जो जितनी गर्मी पड़ी उसकी वजह से जो फ्लावर की हार्वेस्टिंग होती थी गुलाब की, वो सीज़न ख़त्म हो गया। हुआ भी तो उसमें रोज़ के कंटेंट कम थे, तो अब ऑटोमेटिकली जिस उसमें ये निकलता था, 1 क्विंटल निकलता था फ्लावर, अब वहाँ पर लेबर उतनी लगेगी बल्कि ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बहुत स्कैरसिटी हो गई। और उसकी पिक करेगा वो बेचारा 10 किलो, उसकी तो लाइवलीहुड उतनी ही है, तो ऑटोमेटिकली उसी तरह किसान की है, वो बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो वो जब वो कॉस्ट बढ़ाएगा देगा, ज़्यादा देगा, हमें अगर उसको ज़िंदा रखना है तो उससे हमें ज़्यादा का लेना पड़ेगा। फिर जब हम ज़्यादा का रॉ मटेरियल लेंगे तो अल्टीमेटली हमको महंगा भी मिलेगा, फिर हम महंगा देंगे, तो फिर वहीं पर हम लोग वापस पहुंच रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात, कि हम इसके लिए सिंथेटिक में फिर क्यों नहीं आदमी ले। So it is a
द सेम कलर, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस की पूरी मैचिंग दिस पेपर एंड ऑल एवरीथिंग यू हैव टू प्रोक्योर एंड देन. Praveen and Rachna are now diversifying their business to include products that require less natural oil. At the other end of the production cycle, flower suppliers like Qayyum tells us how it's been getting increasingly difficult to meet the demands of the industry. Reduced production has been driving some to sell flowers in the black market. अभी ये बेले का भाव है 110 रुपये, रोज़ का भाव है 58 और मेहंदी का है 80 रुपीज़ भाव है। ब्लैक बिक रही है 115 रुपये में। जी, ब्लैक में बिकते हैं। जब माल की कमी होगी, डिमांड ज़्यादा है और माल है नहीं, तो ब्लैक में बिकता है। Typically, the harvesting months of April and May are a visual treat when jasmine fields like these glisten with white flower buds. But this year, there is hardly any bloom. असर ये पड़ता है जैसे कि इस पेड़ में मतलब आधा किलो निकलना चाहिए, उसमें निकल रहा है 300 ग्राम, 200 ग्राम का डिफरेंस आ जाता है। ये होता है कि इस खेत में मतलब पूरे में निकलना चाहिए 10 किलो, निकल रहा 6-7 किलो, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। Cradled within the Indo-Gangetic plains and traditionally best stored with predictable weather, Kannauj and about 250 hectares of land around it has historically had ideal conditions for horticulture. फर्टिलिटी का तो खेल होता ही है, कोई फसल अगर हम लोग करेंगे फर्टिलिटी तो खेल होता है। यहाँ की मिट्टी, कन्नौज की मिट्टी जो है इन वैरायटियों के लिए बहुत सुटेबल है। अन्य वैरायटी जैसे नहीं हो पा रही, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि जो नूर जहाँ वैरायटी जो मैंने यहाँ ट्रायल में लगाया था वो नहीं चल पाई, लेकिन ये वैरायटियाँ आपको बताएं चाहे चीनिया हो चाहे कलकतिया हो, वो इन बढ़िया से चलती हैं। बेला की रोज़ा जो बेला में जो है मोगरा सिंगल वैरायटी ठीक से चलती है। इन वैरायटियों मिट्टी यहाँ सुटेबल वैरायटी है, इसके लिए न्यूट्रिएंट बढ़िया मात्रा में उनको मिलते हैं, अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, इसलिए इन वैरायटियों को किसान यहाँ लगाता है और दूसरी प्रजातियों को नहीं लगाता है। इसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे कि आप लोग जो बेला में गुलाब में जो दिक्कतें आपके साथ रहती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Horticulturist Dr. Amar Singh has been working with local flower farmers for over 2 decades. He explains how climate change has lately altered the traditional temperate conditions of the Gangetic plains. A sudden rise in temperature now makes these delicate crops more vulnerable to pest attacks and weakens the buds prematurely. ये पत्ती काली होती है, कावी तो थोड़ी कम मात्रा में है, लेकिन ये धीरे-धीरे करके बढ़ती चली जाती है। For many traditional flower farmers, erratic weather changes is a new phenomenon that they are unable to comprehend. पैदावार भी कम होती है, उसकी सिंचाई ज़्यादा लगती है, लागत ज़्यादा लगती है और आमदनी कम होती है, इसलिए इसमें नुकसान होता है ज़्यादा। इसीलिए आपका फूल में आपका उत्पादन घट जाता है। With the seasonal shifts in the region, Dr. Singh is now training farmers to move up their irrigation and cultivation cycles by a month. किसान जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है उसको समय से पहले चीज़ को करना चाहिए। जब बेला गुलाब में फूल आ रहा है या कली बन रही है, उस समय अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसमें कली खिलने में भी सब दिक्कत आती है। अगर खिलती भी तो कोई क्वालिटी नहीं बनती, उसमें उतना क्वालिटी का फूल खिल नहीं पाता। Kannauj is the only town apart from Grasse, which is in southern part of the France, where majority of the population is engaged directly or indirectly into the perfumery. Shakti Vinay Shukla is the director at the Fragrance and Flavor Development Center, a research and training institute established exclusively to provide technical support to Kannauj's perfume industry. The institute is currently working with IIT Kanpur to understand whether switching to climate-resilient crop varieties could be a viable option. So what we are doing, we are trying the farmers to come to some alternative crops. Suppose do those crops which are not done during, get matured during the winter season. Matricaria chamomile, for example. So if you grow this crop, you could able to complete this during the winter time only. So you are done with that. Then the another crop is the basil. If you do the basil, you could able to do between July to September. So summer is being escaped.
The challenge here is convincing farmers to move away from rose and jasmine, traditionally the most popular and high value of all fragrances. But scientists point out that with climate change and with the composition of flower oils subsequently changing, farmers and perfumers need to work together to innovate their product lines. Because of this climate change, there will be a change in odor profile, change in floral profile. Accordingly, we need to readjust and remarket the product. When the livelihood of almost an entire town is linked to a single industry, any disruption could be potentially disastrous. While Kannauj's rose and jasmine oils made their way to perfumeries across the far corners of the globe, back here, fields of crops like potato and maize were cleared to make space. Practices of monoculture replaced almost every other cash crop, the dangers of which can be felt today. With such a large number of livelihoods at stake, there are some who are trying to keep this centuries-old industry alive, and along with it, its generational craftsmen. An eighth-generation perfumer, Pranav Kapoor, went on to design a perfume tourism trail that has brought curious visitors to the by-lanes of this historic town. Look at commercializing something in the form of tourism. It opens up channels of revenue for the local population, right? Your farmers are seeing a boost of people that are coming there. Your retailers, the people who have shops, are now seeing international tourists walk down and buy scents from them. Right? Somebody may want to open a cafe, somebody may want to cater something else to tourists, maybe in the form of logistics or whatever. So this opens up the thought process of the people that now that, okay, through perfumery, now we are getting different sources of revenue which we can capitalize on. So that is a liter of 1 liter of rose. What I am adding to the table is, I am putting a spotlight on it. I am putting a spotlight on an industry that has been supplying to the world and has been predominant and known for thousands of years, right? Which people in India themselves didn't know about, right? So my thing is education and a spotlight is something that will make the next generation, the youth that is currently growing in Kannauj, give interest into this, that, oh, there is a future in this city. We don't need to go to a Delhi, we don't need to go to a Bombay, we don't need to leave the city for better opportunities. India's overall fragrance market is valued at over $500 million globally, and the Ittar industry in Kannauj accounts for nearly 30% of this business. On the other hand, according to the Climate India report by the Centre for Science and Environment, India also experienced 93% of extreme weather conditions for the first 9 months of 2024. The financial implications of climate change are already visible for the people of Kannauj. The question is, will they be able to reinvent their legacy as India's perfume capital? Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.